विकेट्स गिरते रहेंगे, लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। विकेट्स गिरते रहेंगे, लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। विकेट्स गिरते रहेंगे, लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Baba Nisar and we are live once again on JK Sports HB for one more match, the second of the day, and overall it comes to you as the match number 20 of the House of Wealth Champions League Edition 1 Season 2025. It's Valley Warriors Srinagar again for the second match. They outclassed the Elegant Strikers Srinagar in just a very simple fashion. Valley Warriors Srinagar led by Mr. Syed Sagar, and they find a new opponent in the name of the Real Sultan Summerbugh led by Mr. Omar Alam. So not taking much of your time, alongside we have got Mr. Javed Daryal, the chief mentor, and Arshad Saab, who is the assistant of this pitch curator out here. So not taking much of your time, all going for the toss. Let's see who has got the coin and who calls. It's Umar who is going to spin and Syed Sagar is going to call. It's tails. It is tails. Syed, congratulations. टॉस आपने जीता. दूसरा मैच आपका दिन का. पहले में जीत हासिल हुई, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पहला मैच हमने इंशाल्लाह अच्छे से जीता और अब दूसरे मैच की तैयारी नो डाउट.
बट हाँ कि अब ये हमारी सोच होगी कि अगला मैच हम नए से स्टार्ट करें, तो विनिंग नोट पे ही जाएंगे, कोशिश करेंगे कि अपोनेंट टीम को रिस्ट्रिक्ट करें, तो उसके बाद चेज आसाम तो रन रेट का इशू आ सकता है अगर हम आउटकम की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपकी टीम ने पहले 2 मैचेस यहां पे लूज किए, फिर तीसरे में जीत हासिल की, और आई बिलीव कि डेफिनेटली इट्स टफ स्टेज फॉर यू, इवन कि अगर रन रेट भी ज्यादा बेहतर होगी फिर भी मेरे ख्याल से यू कांट मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड। हाँ बिल्कुल, देखिए हम मेरी एक अलग सोच है, मैं रन रेट के हिसाब से नहीं जाना चाहूँगा। मेरी एक सोच होती है कि अगर हम मैच जीतते हैं, चाहे वो फिर किसी भी मार्जिन से हो, बट ये है कि मैच जब जीतते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, तो इंशाल्लाह बाकी गॉड नोज बेटर कि किसको बाहर जाना हो किसको अंदर आना हो, तो लेकिन मेरी ये सोच रहेगी कि हम पहले मैच जीतें। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू सईद। And Umar, now you are batting first, as Said did mention that they are bowling. So eventually, we believe that already you are into the next stage. So it's just like a practice session for your side. No, you never know. This is cricket, and anything can happen. See, we were looking to bat first because it will be the 4th innings on the same wicket. Rest is. See, it's up to Allah. We have to put on a good show. We will try to put up a good show and leave rest to Allah. And coming back to the stage, you know, the way you finished it in their last matches, you believe the morale of the team is just quite high. Yeah, absolutely. It's a T20 game. You know, it's a momentum game. So we will try to get that momentum into this game and win it from here. And preparations for the coming games, because now the competition might get a bit more tougher. Yeah, I think we have a settled side now, and from the past 6 months, we have been searching for this settled unit, and I think we are doing a fair job now. All the best for the game. Thank you. So the news from the center: Captain Valley Warriors Srinagar, Said Sagar, winning toss and bowling first.
And Tajamal Baba and Boy Mir to Badgam lads. Now they're opening the innings for Sultan Summerbugh. Just talking about Sultan Summerbugh.
It's just a bit of a simple game for them because they win, they have no problems whatsoever. But if they lose, it might be just a bit of a close shave. And on the other side, as Captain Syed Sagar did mention, he believes in winning the game. That's what actually is something good for the side. So they will be having some plans, some calculations. Here is the first ball from Syed Sagar. Keeps low. And that first match of the day, Elegant Strikers lost by 7 wickets. It was a simple chase, especially the way Irfan Mir and Sarsheel they batted, both scoring half centuries. Chasing 123, it wasn't a big deal. Losing 3 wickets. And Naveed Kadu, absolute performance with the ball, picking up 4 wickets, and he was the man of the match. And the first run on the board. Basit Akbar, Irfan, Sarsheel, Jalil, Syed Sagar. Very good side if we try and talk about Valley Warriors. Naveed Kadu also in the big man. Rahil Leggy. Now Boy Mir. Easy pickings. And I believe the Real Sultan Summerbugh, they will have come up with full preparations and full homework. But on the cards, you know, the Real Sultan Summerbugh looks a bit better side on account of some match winners in the side. But you never know, at the given day, it can be a tough day at the office. That's what Syed Sagar also believes in. Naturally, he's a very aggressive player, but now leading the side as a captain. As I was mentioning in the first innings, he's a busy player, busy captain. And he just motivates his team, his players individually. That's what keeps the team going. It's a very special lad. Oh, almost chopped on. Lucky that the ball just goes over the stumps. Again, not able to pick that gap. So the first over done. 3 singles from it. Winning toss and bowling first. And inviting Sultan Summerbugh back. खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है. डोंट वरी एट ऑल क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रेक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं. घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं और हाँ, यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेविंग्स के साथ. तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रेक ऐप. And it is Naveed Kadu, the man of the match of the first one. 118 matches, 176 wickets, 5 for 27, the best. 17 times a 3-wicket haul. And he proved his mettle in the first innings. Naveed Kadu picking up 4 wickets, looked unplayable. Easily just making that
for the batters to try and just chase down that 123. Valley Warriors, a very, very simple victory, defeating Elegant Strikers. There he goes. Keeps low. Tajamul Baba, you all know, is a big man, a tall guy. A lot of time is spent. We haven't seen this man who has been given that credit of the sixer man of Kashmir cricket. Sixer king. We haven't seen many sixes in this tournament from this guy, Baba. And good ball. Now you could see. I was talking to him when he received his man of the match. Is you sledging a part of your game and plan? He said, yes, it is. And he's continuing the same. That against Baba. Not able to pick the gaps. Brilliant bowling from Kadu. I believe the plan is working quite nice. The reason, because having those 5 fielders plus a slips makes that 6 on the offside, not letting Baba to try and fetch a single. The plan is to try and just push him to try and go for that big stroke. There he goes. And he is telling Tajamul Baba, go for a 6. Both accepting it very smiling fashion. That's lovely. Very great to have this sportsman spirit. Not losing the blood and accepting it in a very smile. And again, misses it completely. What a great over. It's a maiden from Navid Kadu. 2 overs gone. No run in that last. Think mobile. Think Solucity. आपका पैसा कब बनेगा? जाने के लिए कांटेक्ट करें हाउस ऑफ वेल्थ को। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा? ये आपको हाउस ऑफ वेल्थ बताएगा। ये टाइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैक्स होम सॉल्यूशन से खरीदा, घर चमक गया। मैक्स होम सॉल्यूशंस पर आओ, अपने घर को नए स्टाइल में सजाएं। शुक्रिया बाबा निसार। तो आज के दिन का दूसरा मुकाबला द रियल सुल्तान समरबुक की टीम अब भिड़ रही है वैली वेरियर्स श्रीनगर की टीम के साथ, और टॉस जीता है यहाँ से वैली वेरियर्स श्रीनगर के कैप्टन ने, और पहले इनवाइट किया है अपोजिट टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। फिलहाल 3 रन केवल आए हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। तजम्मुल बाबा और बोई मीर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पिछले ओवर की बात की जाए, नवीद काड़ू ने वो ओवर डाला था जिसमें वो मेडन ओवर डाला था तजम्मुल बाबा के विरुद्ध, और अच्छी गेंदबाजी। हालांकि पिछले मुकाबले की बात की जाए तो पिछले मुकाबले में नवीद काड़ू मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे, जो 4 ओवर की गेंदबाजी में केवल उन्होंने 12 रन खर्चे हैं और 4 सफलता दिलाई अपने टीम के लिए। देखते हैं तजम्मुल बाबा और बोई मीर किस प्रकार की शुरुआत देने में कामयाब रहेंगे अपने टीम के लिए। एक बड़ा मुकाबला आज के दिन का, ये दूसरा मुकाबला। सईद सागर अगली गेंद के साथ इस बार डिफेंसिव अंदाज के साथ गेंद को खेला है, और तजम्मुल बाबा की बात की जाए तो 10 गेंदों से केवल 2 रन अभी तक बनाए हैं, और नवीद काड़ू के विरुद्ध वो लगातार बीट होते जा रहे थे। पिछला ओवर मेडन डाला था नवीद काड़ू ने, और बार बार इशारा कर रहे थे तजम्मुल बाबा की तरफ कि वो बड़ा स्ट्रोक के लिए जो आप जाने जाते हैं, छक्का लगाने की कोशिश कीजिएगा, और पूरी तरह से चुनौती दी थी पिछले ओवर में नवीद काड़ू ने यहाँ पर तजम्मुल बाबा को। अब जाके तीसरे ओवर की शुरुआत सईद सागर, सामने है बल्लेबाज तजम्मुल बाबा, 10 गेंदों से 2 पर नाबाद। अगली गेंद स्लोवर, और गेंद बैकफुट पर क्षेत्र में चली गई है, उस और खिलाड़ी तैनात। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक धीमी शुरुआत मिल रही है यहाँ पर द रियल सुल्तान समरबुक की टीम को, और द रियल सुल्तान समरबुक की टीम के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत ही ज़रूरी है।
और हालांकि वैली वेरियर श्रीनगर और द रियल सुल्तान समरबुक दोनों अपना अंतिम मुकाबला यहाँ से खेल रही है। वैली वेरियर्स की बात की जाए तो 2 मुकाबले यहाँ से हार चुकी है। आज के दिन का जो पहला मुकाबला उन्होंने खेला था वो जीता है उन्होंने एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम के साथ, एक बड़े मार्जिन के साथ वो मुकाबला यहाँ से उसमें जीत दर्ज की थी वैली वेरियर्स श्रीनगर की टीम ने। और आज का ये दूसरा मुकाबला और लीग का अंतिम मुकाबला, दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति रहेगी। और देखते हैं कौन सी टीम यहाँ से इस मुकाबले को जीतेगी। और फिलहाल अच्छी बात ये है कि हाउस ऑफ वेल्थ क्रिकेट क्लब की टीम जो है वो इन हो चुकी है इस टूर्नामेंट में और शायद कल उनका मुकाबला यहाँ से खेला जाएगा JK11 ने शुपया की टीम के साथ। फिलहाल केवल 4 रन बनाए हैं अभी तक द रियल सुल्तान समरबुक की टीम ने। सईद सागर अगली गेंद के साथ इस बार छोटी गेंद खेलने में कामयाब और कोई खिलाड़ी उस ओर तैनात नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई है 4 रन के लिए। तो ये पहला चौका इस इनिंग का और तजमुल बाबा के बल्ले से भी निकलता हुआ ये पहला चौका। इस चौके के साथ स्कोर 8 पे पहुंच चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। लेकिन अभी तक धीमी शुरुआत मिल रही है यहाँ पे द रियल सुल्तान समरबुक की टीम को। केवल 8 रन बनाए हैं 2.5 ओवर की गेंदबाजी में, जबकि तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। और करंट रन रेट की बात की जाए तो केवल 3 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पे रन बना रही है। इस बार अच्छी गेंद फिर से नीची रहती है और पूरी तरह से बीट हुए बाबा। गेंद सीधे जाके विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 ओवर का खेल मुकम्मल। So Kanto will continue. What a magnificent spell is bowling. Starts off with a maiden. Slips in place. No third man. Backward point, straightish point, cover, mid-off for Mir. Naturally, talk about this man. He is a good player of the fast bowling. And talk about this man, Naveed. He is getting close to the man. He is getting engaged in talking to them. Just making them lose your cool. Just making them lose your shirt. Making them a bit away from the cool and calm, I believe. We are not able to play this man. And we haven't seen so many boundaries. I guess only one, that from the blade of Tajamul Baba. We're in the over number 4. It's 9 without a wicket, so a slow start to the approach. Maybe it can't do. I believe he got to be try. And Baba loses his cool. And the catch has been taken. Cardo surprises Tajamul Baba. He was getting on his nerves. He was just making him lose his blood, and that's what has gone exactly. And Baba goes, scoring just 6. It's a slow innings of 14 balls. Sultan Summerbugh have lost the first blood. It's 9 for 1. It's Baba goes. Even though today we could see Musin Ramzan is also in the lineup. But Naveed Kadu, what a day he's having.
just looked impressed in the first innings. And just continuing the same in the second as well. Is yet to be hit for a single run. And he has got a wicket, that too of the sixer king, Tajamul Baba. Look at his eyes. And I believe umpire must get into the... and just cross through. And you just go excessive. You can be given some warnings from the umpire. That's what Zubair is just having a talk with this Naveed Kadu. What a special lad this guy is. Oh, again, that was a bit quicker. Leaning forward was Muhsin Ramzan. Big man. Manager of this side, Sultan Summerbugh as well. And Valley Warriors Srinagar, all of a sudden, they have come up to the toes. Feeling just good with the top of the game plan. From nowhere. And to that, absolute plans. And just going great in striking nice sweeps. Lovely shot from Muhsin. That's gone down to the right of the square leg. And first time we could see the runs being scored off the bowling of Naveed Kadu. And a lovely way to get off the mark, Muhsin Ramzan. I've got Arslan Bilal as my co-commentator with me. Arslan, Real Sultan Summerbugh starting off quite slow. And I believe it looks quite difficult to handle and just play the shots against the likes of Naveed Kadu. जी हाँ बिल्कुल, हमने पहले मुकाबले में भी देखा है जिस प्रकार से नवीद काडू ने आज गेंदबाजी की है। काफ़ी मुश्किल रहा था उस मुकाबले में भी उसके विरुद्ध बल्लेबाजी करना, और आज यहाँ पे फिर से इस मुकाबले में भी वही गेंदबाजी दोहराते हुए और अब जाके पांचवें ओवर की शुरुआत सईद सागर अपने तीसरे ओवर के साथ, हालांकि अभी तक केवल 8 रन उन्हें खर्चे हैं और एक धीमी शुरुआत अभी तक मिल रही है द रियल सुल्तान समरबुग की टीम को। और नवीद काडू ने अपने दूसरे ओवर में यहाँ से एक बड़ी विकेट हासिल की है, तजम्मुल बाबा को चलता किया है और इस बार बॉय मीर गेंद को खेलने में कामयाब और केवल एक सिंगल मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 5वां ओवर इस समय प्रगति पर और केवल 3.36 की औसत से अभी तक रन बना रही है द रियल सुल्तान समरबुग की टीम। और ये लीग का अंतिम मुकाबला आज खेला जा रहा है वैली वॉरियर्स श्रीनगर और समरबुग के दरमियान, और दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत ही ज़रूरी है। और टॉस जीतकर पहले इनवाइट किया है अपोजिट टीम को बल्लेबाजी करने के लिए सईद सागर ने, और देखते हैं इस पहली पारी में कितना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर पाएगी यहाँ से द रियल सुल्तान समरबुग की टीम। सईद सागर अगली गेंद के साथ ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को खेला है, खेलते ही दौड़ पड़े, तेजी के साथ यहाँ पे रन मुकम्मल किया है। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अगर पिछले 2-3 दिनों की बात की जाए तो विकेट जो है बिहेव अच्छा नहीं कर रहा है बल्लेबाजों के साथ, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पिनर्स का काफ़ी बोलबाला रहा है इस पिच पे। जिस प्रकार से स्पिनर्स ने पिछले 2-3 रोज से यहाँ पर गेंदबाजी की है तो काफ़ी हद तक बल्लेबाजों को परेशान करके रखा है, और आज भी वैसा ही बिल्कुल देखने को मिला है। हालांकि पिछले मुकाबले में जलील भट्ट, राहिल लेगी और नवीद काडू ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है केवल 120 पर पूरी पारी को सिमटा है।
और आज भी यहाँ से इस मुकाबले में भी अपने दूसरे ही ओवर में नवीद काड़ू ने जो तजम्मुल बाबा की विकेट यहाँ से हासिल की है वो कहीं ना कहीं हद तक दबाव में डाला है यहाँ पर बल्लेबाजों को। पूरी तरह से प्रेशर है इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर। खासकर बोईमीर की बात की जाए, 8 गेंदों से केवल 4 रन बनाए हैं। और रियल सुल्तान समरबुक की टीम चाहेगी तकरीबन 130-140 का लक्ष्य यहाँ पे खड़ा करने का, लेकिन शुरुआत में ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से वैली वॉरियर्स श्रीनगर के गेंदबाज। और इस बार छोटी गेंद पुल करने में कामयाब और गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। ये बोईमीर के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका और स्कोर में इजाफा। स्कोर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। It's a lovely shot, indeed. As Arslan was mentioning that throughout the last 4 days, we're seeing it has been a bowling dominant game, especially in your lineup. If you just carry some special supiners, that's what has been the plan of Valley Warriors, coming up with some new faces today in the squad. A good blend of youth and experience there. And they have been asking questions. Too close to cut. Good catch by the keeper. Said Sagar strikes. And in walk to the centre, Sajjad Ganai. दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर द रियल सुल्तान समरबुक की टीम को। और खराब शुरुआत, 2 विकेट शुरुआत में ही यहाँ से गंवाए हैं द रियल सुल्तान समरबुक की टीम ने। हालांकि पहला विकेट जो दिलाया है नवीद काड़ू ने, उसके बाद टीम के कैप्टन सईद सागर ने एक और विकेट दिलाई है। बोईमीर को चलता किया है, काट बहन के चलते बोईमीर अपना विकेट गवा बैठे। अब जाके नए बल्लेबाज डॉक्टर सज्जाद आए हैं अब जाके बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि रन लेने की कोशिश, लेकिन मोहसिन रमजान यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे। रन तो मिल सकता था यहाँ पर, लेकिन मना किया है मोहसिन रमजान ने। इस डार्ट गेंद के साथ ओवर मुकम्मल हो चुका है। 5 ओवर का खेल मुकम्मल, 19 रन, 2 विकेटों के नुकसान।
ये दोनों बल्लेबाजों को इस एक रन के इजाफे के साथ 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 5.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हो चुकी है और एक धीमी शुरुआत मिल रही है यहाँ पर द रियल सुल्तान समरबुग की टीम को और पूरी तरह से गेंदबाजों ने दबाव बना के रखा है बल्लेबाजों के ऊपर। हालांकि शुरुआती 2 झटके लगे यहाँ पर तजम्मुल बाबा और बोई मीर की सलामी जोड़ी मैदान छोड़कर वापस चली गई है और मोहसिन रमजान और डॉक्टर सजाद के ऊपर काफ़ी सारा सजाद गनाई के ऊपर काफ़ी प्रेशर नज़र आ रहा है और बहरहाल 6 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब आपका ईमान और इन्वेस्टमेंट दोनों सेफ है। विकेट्स गिरते And what a special power play, I would say. Look at the number of runs, only 23 on the board, 2 wickets. Said Sagar and Navid Kado sharing 1 wicket each. One thing is for sure, if you try and look at this pool, even though Sultan Summerbugh have just got a bit upper edge when it comes to the net run rate in comparison to this very Valley Warriors Srinagar. Sultans have won 2 out of 3. Valley Warriors have won just 1 out of 3. So it's quite understood, you know, if Sultans win it, they go straight to that knockout stage and into that eliminator or qualifier stage. But just talk about the side of Valley Warriors. Maybe if they just get and chase down this total quite at ease in the limited number of overs, just leaving some overs spare, you believe that there can be some, you know, absolute ups and down and a big upset in the net run rate column. And who knows, we might have a miracle in the pool. जी हाँ बिल्कुल। हालांकि पिछला मुकाबला उन्होंने एक बड़े मार्जिन के साथ जीता था और अगर इस मुकाबले में भी उनकी जीत उसी तरह से हुई तो निश्चित तौर पे कुछ भी हो सकता है और वैली वॉरियर्स श्रीनगर की टीम भी कुछ हद तक आगे जा सकती है। लेकिन अगर नेट रन रेट की बात की जाए तो उनकी नेट रन रेट जो है वो काफ़ी नीचे है और जिसके कारण उनके चांसेस मेरे ख्याल से बहुत कम बचते हैं अगले राउंड में जाने के लिए। फिलहाल राहिल की गेंदबाजी में परिवर्तन, पहली गेंद और बैकफुट पर गई गेंद को खेला है, मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद चली गई है और उस ओर खिलाड़ी तैनात उन्होंने गेंद को फील्ड किया है, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। And if you look at the approach of Musa Ramzan, even though he is the manager of this side, Sultan Summerbugh,
But he's a legend. You know, he is an experienced cricketer for this side. He has played a lot of cricket. Okay. और 7वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, फाइन लेग क्षेत्र में गेंद को खेला है और दर्शक बनकर रहे वहां पर खिलाड़ी और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रन के लिए। मोहसिन रमजान, तारीफ करनी होगी इस स्ट्रोक की, और पहले ही पढ़ लिया था इस गेंदबाज को। हालांकि राहिल लेगी की गेंदबाजी की बात की जाए तो काफी घुमावट है इस गेंदबाज में, कहीं ना कहीं हद तक बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है ये खिलाड़ी। लेकिन इस बार मोहसिन रमजान की अच्छी सोच और घुटना टेका और गेंद को खेलने में कामयाब हुए फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। और मोहसिन रमजान 12 पे पहुंच चुके हैं, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया। टीम का स्कोर 28 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। और अगर आपको ये मुकाबला जीतना है तो एक लंबी पारी खेलनी होगी, एक बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड करनी होगी। इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, हवा में गेंद, लेकिन खिलाड़ी काफ़ी दूर थे और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। और तेजी के साथ ये दूसरा रन भी मुकम्मल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ स्कोर 30 पे पहुंच चुका है, 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पे जिम्मेदारी निभानी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि शुरुआती 2 शुरुआत मिली है यहाँ पर द रियल सुल्तान समरबुग की टीम को। और कहीं ना कहीं हद तक एक बड़ी पार्टनरशिप की दरकार है यहाँ पर द रियल सुल्तान समरबुग की टीम को, तभी जाके एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पे बना सकती है। फिलहाल राहिल लेगी अगली गेंद के साथ, हल्की सी अपील, और अंपायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरह से ओवर मुकम्मल हो चुका है। Said Sagar, you are on the mic. Can you hear me out? तो शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। तो इम्पोर्टेंट मैच आपके हाथ में, तो क्या कहेंगे इस अप्रोच के हवाले से? ऑलरेडी आपने दिन का पहला मैच जीता है, तो मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग सा मैच आपके लिए इस वक्त जारी है। Yes, you on the mic now. Sagar, can you hear me out? बहुत अच्छे, बहुत Sagar, you are audible to me. If you hear me out, please give a thumb impression. आ रही है आवाज, मेरे कानों तक आ रही है। यू कैन स्पीक नाउ। ओके सर, बताइए। तो काफी इंटरेस्टिंग सा मैच अभी आपका जा रहा है। तो यू नेवर नो, देयर कैन बी अ बिग अप्स एंड डाउन्स व्हेन इट कम्स टू द नेट रन रेट। T20 एक ऐसी गेम है जिसमें आपको कुछ पता नहीं चलता जब तक अब किसी को। सो हमारी उम्मीद यही रहेगी कि अच्छा मैच खेले। पिछला मैच तो हमारा अच्छा गया, इंशाल्लाह ये मैच अच्छा खेलें, तो बाकी फिर डिपेंड करता है सर। और ब्लेंड ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस वन साइड, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन। और इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मेरी सोच ये कि एक कॉम्बिनेशन की वजह से ही जीता जाता है जो भी आप मैच के लिए, स्पेशली T20 कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है।
जिस मैच तो सुनना चाहेंगे आपसे, जैसा कि आपने खुद एक बड़ा फॉर्मेट, एक बड़ी लेवल की क्रिकेट खेली है, तो यहाँ हाउस ऑफ वेल्थ चैंपियंस लीग लक्टिपोरा में आके यू बिलीव दैट फील, दैट एक्सपीरियंस एंड एटमॉस्फेयर इज स्टिल ऑन? 100% सर। जैसा जब मैं पहला मैच खेलने आया तो मैंने लोगों को यही कहा कि मैं अंदर आया था, मैं शायद स्ट्रेट आ रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर जो फैकल्टी मैंने देखी काफ़ी अच्छी है, जो यूजुअली नहीं मिलती है प्लेयर को, बहुत बहुत ज़बरदस्त। मैं अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ पर मैच खेलना मेरे हिसाब कंट्रोल हो गया मेरे लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे विकेट बहुत कम मिलते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर आपको बहुत के लिए। और बात करेंगे विकेट्स के बारे में, क्योंकि थ्रू आउट द कश्मीर आपने काफी अरसे से क्रिकेट खेली है। तो जैसा कि प्रिपरेशंस आप देख रहे हैं कि हाउ विल यू रेट दिस हाउस ऑफ वेल्थ चैंपियंस लीग एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द लीग्स इन होल J&K? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हर लीग की अपनी 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 एक वैल्यू होती है। हर एक लीग जब निकलती है, उनकी जो चाहते हैं क्या, बट ये ऑर्गेनाइजर बॉडीज के लिए भी एक कंपटीशन है। जब लीग निकलती है, उनके लिए भी बहुत बड़ा कंपटीशन लगेगा, तो वो भी खुद को प्रिपेयर करेंगे इससे भी अच्छी लीग करने को। बट मैं ये अभी कहना चाहूँगा, जो अभी मैंने रिसेंटली लीग्स खेली है, तो कंपेयर अगर करेंगे उन लीग्स के बारे में, नो डाउट वो बहुत अच्छी लीग्स थी, बट यहाँ फिर मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ऐसा लगा था मैं स्टेट मैच में गया हूँ। तो ये एक बड़ी बात है मेरे हिसाब से, आप खुद ही समझ सकते हो, जिसने स्टेट खेला हो। और वो एक ऐसी बात बोल रहा हूँ कि ये वाला जो ग्राउंड है, यहाँ का जो फील है, मैं जब एंटर करा था मुझे लगा कि मैं स्टेट मैच खेलेंगे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सही है, सही है, तो ये And Saeed, now I believe this is something very glad moments for you. Kyunki Musir Ramzan goes, he's a big man, and I believe you are absolutely big in the game now. 100% सर, हर एक विकेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात ये मैच लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह लग के खेलेंगे, बाकी देखेंगे एट द एंड में रिजल्ट क्या निकलता है। उम्मीद तो ये है कि अच्छा से फिनिश करेंगे टूर्नामेंट, तो जिससे हम भी कर सके लीग में। तो अभी तक हमने देखा कि पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे स्पिनर्स ने काफी डोमिनेट किया है, तो आप अपनी प्लेइंग 11 में काफी अच्छे मेरे ख्याल से स्पिनर्स को ला रहे हो, तो यू बिलीव दिस इज रियली ब्रिंगिंग यू ऑन द टॉप ऑफ द गेम? 100% सर। विकेट के अंदर तो फिर हमें कैप्टनसी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो कोई भी कैप्टन रहेगा। हाँ, ये है कि विकेट क्या बिहेव कर रही है उसी हिसाब से वो So one final question, special message from you to the cricketing fans. करिए और कोशिश करेंगे अपना एंटरटेन करेंगे और मायूस नहीं करेंगे। Okay, all the best and keep fighting. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
Ninth over in progress. Last ball coming your way. 40 for 3. Valley Warriors from nowhere, just standing at the top of these matches today. Another dot. Rahil Leggy finishes his over. 9 gone. It's just a great column in the extra. Just 1 run here there. It's 40 for 3. The Real Sultan Summerbugh losing toss, being invited to bat first. As I was talking to the captain of Valley Warriors, so it's another change in the bowling. It's Mudassir Abbas. Another spinner introduced. Things looking a bit shaky on account of Sultan Summerbugh. And off the back foot, he crashes it straight to the long off. It is just a single. And eventually, at this moment, they are slightly going over 4 runs. That will take them to around 100, which I believe is not going to be sufficient enough. Not able. Hinan Malik, another top-level cricketer. Alongside Sajjad Ganai, has been there almost to run a ball. And off the back foot, he cuts it well. It's Sarsheel Abbas who gives a chase and gets to the top of the ball in no time. And tries to smash. Oh, not able to connect it well. It's not coming in huge. It's just coming in 1s and 2s. I believe Valley Warriors Srinagar will be quite pleased with the way things are going absolutely at the moment. Going tough for Sultan Summerbugh. 3 wickets down already. And this time he connects as it gone. Just 1 bounce to the right of that mid-wicket fielder. And Sajjad Sultan takes a long strike, tries to minimize that pitch of the ball. And goes perfect with that swing. And it's a beautiful shot, a beautiful boundary. Actually is a nose. Rather it was Hinan Malik on that moment. Correction with the name. 50 up on the board. Need a shots like this. And again, this time, here goes in the gaps. Ho! That's gone for 6. What a sweet connection from Hinan. And he has made the ball totally and truly gone over the widest long gone. A boundary followed by a 6. This is the momentum that's to be picked by these men. And Sultan's feeling delighted with those 10 runs of the last 2 balls. And umpire calling, it's a strategic timeout.
तो जिस तरीके से सिचुएशन है अभी आपके कंट्रोल में, तो दूसरा मैच आपका, तो कैसी अभी प्रिपरेशंस एंड यू बिलीव यू आर ऑन द टॉप ऑफ द गेम? आवाज आ रही है? तो मेरा सवाल है कि जिस तरीके की अभी आपकी टीम क्रिकेट खेल रही है, पहले मैच में भी आपने डोमिनेट किया और दूसरे मैच में भी यू आर डोमिनेटिंग, तो इट हैज बीन ए ब्रिलियंट डे फॉर योर साइड. अब आ रही है, बोलिए. जी यही मैं कह रहा था कि जितना कम स्कोर हो चेस के लिए तो उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो मसला एवरेज का है यहाँ पे वो हमें माइंड में है और हम चाहते हैं कि हम भी क्वालिफाई हो जाए. तो जिस तरीके से अभी आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैटर्स को आपने पहले से ही और यहाँ पे एक और विकेट साफ, और लीजिए चलते बनिए सजाद सुल्तान भी एक और विकेट यहाँ पे. तो इरफान एक और विकेट आपके आंख में, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप इस मैच में भी टॉप कर रहे हैं. जी 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 उम्मीद यही है कि हम यहाँ से अब अच्छा करेंगे और हम और यहाँ से हो जाए अगले 10 ओवरों में गेम में बने कि वो चेस करे. यस, इट्स क्लियर नाउ. जितना कम स्कोर यहाँ पे के लिए प्लस 120 हम चाहेंगे कि 120 हम ओवरों में करें और हम क्वालिफाई कर दें. तो टारगेट की अगर बात करेंगे, कितना अभी जहन में क्या चल रहा है, किस टारगेट पे रोकना चाहोगे आप सुल्तान समरबग को? इस वक्त तो दिमाग में चल रहा है कि हो जाए 120, यहाँ पे ठीक रहेगा हमारे लिए चीज के लिए. तो यहाँ हाउस ऑफ वेल्थ चैंपियंस लीग में खेल के मेरे ख्याल से आज पहले यहाँ पे आज खेल रहे हो, इससे पहले आपने नहीं खेला था यहाँ पे इस टीम के साथ, तो यू बिलीव एक अलग सा माहौल, एक अलग सा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है? नहीं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, जिस तरह से सजाया है ग्राउंड को और जिस तरह से वर्क हो रहा है, बहुत ब्रिलियंट है यहाँ पे. बहुत मजा आ रहा है कि एक टॉप लेवल की क्रिकेट हो रही है. तो फाइनली यू बिलीव ऐसे विकेट्स तैयार करना, ऐसे टूर्नामेंट तैयार करना कश्मीर क्रिकेट को अपोर्ट करने के लिए काफी अच्छी तैयारियां हो रही है. नहीं, बहुत यहाँ पे अगर दिन ब दिन की तो लोकल टैलेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है, उनको ज्यादा मौका मिलेगा खेलने के लिए और बस उनके लिए बस विकेट्स अच्छी होनी चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए. तो वही हम चाहते हैं, मौका जितना लोकल को मिलेगा यहाँ पे तो वो क्या आएंगे. तो स्टेज यहाँ पे सजाया गया आपकी टीम के लिए. यू बिलीव यू आर कमिंग अप विद अ बिग अपसेट इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि अगर आप जल्दी से इस गेम को खत्म करोगे, अच्छे मार्जिन से जीतोगे, यू नेवर नो यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेज. नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, किसी को पता नहीं कि क्या होगा अगले मैच में और क्या होगा अगली बॉल पे. तो उम्मीद है कि क्या अच्छा करेंगे और क्वालिफाई हो जाए. और जितना भी आपको टारगेट मिल सकता है 13 और 14 ओवर के दरमियान आपको खत्म करना होगा एंड यू कैन बी इन. सो दिस इज अ सरप्राइज. हम टारगेट की तरफ जाएंगे कि जितना जल्दी हो सके उतने ओवरों में कर जाए, क्योंकि हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा यहाँ पे टूर्नामेंट पड़ा है. तो जाएंगे, हम चाहेंगे कि हम टारगेट की तरफ जाए और जल्द से जल्द खत्म करें. एंड जैसा आपने खुद कहा, nothing to lose, everything to gain. Alan goes. He gives a real thump. That's gone over the head of Irfan Mir. It's gone for a 6. Paji goes big. And Irfan, आपने खुद कहा, nothing to lose, everything to gain. But Umar Alam has some different plans. खिलाड़ी जानते हैं कि सिचुएशन क्या है इस वक्त, खुद आए बैटिंग करने के लिए, तो कुछ दिमाग में ही होगा इनके कि जिस तरह से वो आए हैं, स्पिनर्स को देखा और स्पिनर्स को बहुत अच्छे खेलते हैं. And all the best for the game. Thank you very much for your time. बहरहाल 11वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर.
और 11 ओवर का खेल जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है और 11 ओवर के खेल में अभी तक 59 रन बनाए हैं, 4 विकेटों के नुकसान। खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है। डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रेक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं और हाँ, यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेविंग्स के साथ। तो अभी डाउनलोड को आप 13 से 14 ओवर्स में यहाँ पे फिनिश करोगे तो आपके पास मौका है वो अगले राउंड में जाने का, क्योंकि ये चौथा मुकाबला, उनका पहले 2 मुकाबले हार चुकी है, तीसरा मुकाबला जीता है और आज ये चौथा मुकाबला। इस मुकाबले में जो भी टारगेट आपको मिलेगा और वो टारगेट आपको अचीव करना है 13 से 14 ओवर्स में, तो तब जाके आप वो नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। फिलहाल जलील भट्ट नए गेंदबाज, पहली गेंद को खेला है हिनान मलिक ने और जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के इजाफे के साथ 60 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 4 विकेटों के नुकसान पर। और उमर आलम टीम के कैप्टन और हिनान मलिक की समय जोड़ी बीच मैदान पर, टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी, और समझदारी निभानी होगी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि कभी से काफी सारे ओवर्स आने बाकी हैं और मौका यहाँ पे था लेकिन गंवा दिया है। मैदान पर खिलाड़ी तैनात थे, काफी समय था वहां पर खिलाड़ी के पास, हालांकि ड्राइव तो जरूर लगाई थी लेकिन कैच को अपने वश में करने में नाकाम रहे वहां पर। और इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। जलील भट्ट ने पिछले मुकाबले में वो 2 विकेट हासिल किए थे और नवीद काड़ू ने 4 विकेट हासिल किए थे। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। स्कोर बदस्तूर 62 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 62 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 11.3 ओवर्स हैव बीन बॉल्ड सो फार। उमर आलम समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि पिछले ओवर में वो एक छक्का भी लगाया था जब 2 स्लिप लगाई गई थी उमर आलम के विरुद्ध, तब जाके कदमों का इस्तेमाल किया था और लॉन्ग ऑन के ऊपर से वो बड़ा छक्का लगाया था उमर आलम ने। और गेंदबाज के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हर गेंद पे वो सिंगल चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हिनान मलिक बेहतरीन बल्लेबाज, पूरी तरह से गैप का इस्तेमाल किया है और 2 रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। इन 2 रनों के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 5.49 की औसत से यहाँ पे रन बना रही है द रियल सुल्तान समरबुग की टीम। और देखते हैं पहली पारी में यहाँ से कितना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर पाएगी द रियल सुल्तान समरबुग की टीम। और दोनों टीमों के लिए अगर बात की जाए तो ये मुकाबला जीतना बहुत ही जरूरी है। इस बार ड्राइव किया है गेंद को, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद चली गई है, 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस तरह से ये ओवर मुकम्मल हो चुका है, 12 ओवर का खेल मुकम्मल, 67 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। ये टाइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैक्स होम सोल्यूशन से खरीदा, घर चमक गया। मैक्स होम सोल्यूशंस पर आओ, अपने घर को नए स्टाइल में सजाएं। राहिल लेगी और कंटिन्यू अपनी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक 3 ओवर की गेंदबाजी में केवल 15 रन खर्चे और 2 सफलता इनके नाम। क्या इस ओवर में इस पार्टनरशिप को वो ब्रेक कर पाएंगे? क्या हिनान मलिक का विकेट यहां से दिला पाएंगे अपने टीम के लिए? और हिनान मलिक के ऊपर सारी जिम्मेदारी है यहाँ पर द रियल सुल्तान समरबुग के जानिब से अगर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी, वो तजुर्बे से लेस ये खिलाड़ी, और एक लंबी पारी खेलनी होगी यहाँ पर हिनान मलिक को, तभी जाके एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पे बन सकता है। और फिर से 2 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। उमर आलम और हिनान मलिक के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत बढ़िया है, तालमेल बहुत बढ़िया है दोनों बल्लेबाजों के बीच, और आहिस्ता आहिस्ता से इस रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कोर बदस्तूर 69 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 13वें ओवर का इस समय खेल प्रगति पर। और राहिल लेगी की बात की जाए तो उनके कोटे का यह अंतिम ओवर, इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल उमर आलम की जानिब से और फिर से उसी दिशा में गेंद को खेल दिया है। एक और छक्का, इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा, 75 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, 10 गेंदों पे वो 17 पे पहुंच चुके हैं उमर आलम टीम के कैप्टन।
और अब उन्होंने पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है वो अपने कंधों पे ली है, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे एक बड़ा लक्ष्य चाहिए। तकरीबन 120-130 तक लेके जाने की कोशिश करेगी यहाँ से द रियल सुल्तान समरबुग की टीम, और हिनान मलिक का साथ निभाना होगा यहाँ पर टीम के कैप्टन उमर आलम को। हालांकि पिछले ओवर में भी राहिल लेगी के विरुद्ध वो छक्का लगाया था, और इस ओवर में भी तीसरी गेंद पे वो कदमों का इस्तेमाल और एक और बड़ा छक्का उमर आलम के बल्ले से। स्कोर की अगर बात की जाए तो 75 रन अभी तक बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें आनी इस ओवर की बाकी है, और करंट रन रेट की बात की जाए तो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रति ओवर के हिसाब से 6 रन यहाँ पे बना रही है द रियल सुल्तान समरबुग की टीम। तो प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात की जाए तो अगर विकेट साथ में रहे, पूरे 20 ओवर का अगर यहाँ पे खेल गई द रियल सुल्तान समरबुग की टीम, तो तकरीबन 120-130 तक आसानी के साथ ले जा सकती है। और अगर पिछले मुकाबले की बात की जाए, जो वैली वेरियर्स के दोनों सलामी बल्लेबाज सरशील अब्बास और इरफान लारा ने जो ताबड़तोड़ और विस्फोटक बल्लेबाजी की थी, दोनों बल्लेबाजों ने वो अर्धशतक की पारी खेली थी। पहले सरशील अब्बास ने वो 50 रन की पारी, उसके बाद इरफान लारा अंत तक खेले और उस मुकाबले को फिनिश किया था। एक बड़े मार्जिन के साथ वो मुकाबला जीती थी यहाँ पर वैली वेरियर्स श्रीनगर की टीम। हालांकि अगर बात की जाए तो आज आदिल ऋषि टीम का हिस्सा नहीं है, मंजूर पांडव आज टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन 3-4 स्पिनर्स आज इस टीम में इन हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर आज काफ़ी आसानी हुई है वैली वेरियर्स श्रीनगर की टीम को वो मुकाबला जीतने में। और इस वक्त भी अगर बात की जाए इस मुकाबले में, तो काफ़ी बढ़त लेती हुई यहाँ पे वैली वेरियर्स श्रीनगर की टीम। स्कोर 77 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 13वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना होगा, क्योंकि अगर ये दो बल्लेबाज 3-4 ओवर तक टिके रहे तो मुश्किलात बन सकती है यहाँ पर वैली वेरियर्स श्रीनगर की टीम के। इस बार गेंद को ड्राइव किया है, लेकिन उस ओर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने की गुंजाइश नहीं। 13 ओवर का खेल मुकम्मल, 77 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अल सफ़ीर टूर एंड ट्रेवल्स, जो आपकी मुक़द्दस ख्वाहिश को हकीकत में बदलता है, आपके नेक सफ़र में पल पल का साथी। हम फराहम करते हैं हज और उम्रा के मुकम्मल पैकेजेस, आरामदेह रिहाइश, पुरसकून और महफूज सफ़र, कदम ब कदम रहनुमाई। आपका सफ़र हरमैन हमारा एजाज़। आज ही रब्ता कीजिए अल सफ़ीर टूर एंड ट्रेवल्स, गांधी। जलील भट्ट अगले ओवर के साथ पहली गेंद को खेलने में कामयाब हुए, और डीप में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आहिस्ता आहिस्ता से ये पार्टनरशिप अब बिल्ड होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हिनान मलिक की बात की जाए वो 19 भी नाबाद 13 गेंदों से, उमर आलम की बात की जाए तो 18 रन उन्होंने भी बनाए, और जिसमें 2 छक्के, बड़े छक्के लगाए हैं आज उमर आलम ने। और आज मन बना के आए हैं कि आज एक इस अंतिम मुकाबले में एक बड़ी इनिंग यहाँ पे खेली जाए। हालांकि आज अपने आप को प्रमोट किया है यहाँ पर उमर आलम ने, जो कि नंबर 4 की पोजीशन पे वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। जलील भट्ट अगली गेंद के साथ कट किया है गेंद को, लेकिन अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, रन नहीं मिलेगा। स्कोर बदस्तूर 89 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट 5.85 की औसत से अभी तक रन बना रही है द रियल सुल्तान समरबुग की टीम। हालांकि इस मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पे जोरदार अपील, लेकिन अंपायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, शायद लेग स्टंप को गेंद मिस कर रही थी। और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर 80 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और अभी भी 2 गेंदों का खेल आना इस ओवर में बाकी है। पारी का ये 14वां ओवर इस समय प्रगति पर। जलील भट्ट की बात की जाए 1.4 ओवर की गेंदबाजी, 9 रन, और अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं किया जलील भट्ट ने। हालांकि पिछले मुकाबले की बात की जाए वो 2 विकेट उन्होंने हासिल किए थे, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। लेकिन एक बात तो तय है कि रनों पे पूरी तरह से अंकुश लगा है। यहाँ पे जोरदार अपील काट बिहाइंड की, और विकेट कीपर ने कैच जरूर किया है, लेकिन और शायद अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, 14वें ओवर की आखिरी गेंद। जलील भट्ट गेंदबाजी कर रहे हैं बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ।
और अब ये पार्टनरशिप जो आहिस्ता आहिस्ता से खतरा बनती हुई नजर आ रही है यहाँ से वैली वेरियर श्रीनगर की टीम के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेला है हैंड साइड के क्षेत्र में, पहला रन मुकम्मल किया और एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस तरह से ओवर मुकम्मल हो चुका है, 14 ओवर का खेल मुकम्मल, 81 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 6 ओवर का खेल आना बाकी है और 6 विकेट आपके हाथ में है। अगर यहाँ से 130 140 बनाने में कामयाब गेंद नीचे रहती हुई और पूरी तरह से बीट हुए यहाँ पर उमर आलम, गेंद सीधे जाके विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर 81 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 5.72 की औसत से यहाँ पे रनर्स बना रही है द रियल सुल्तान समरबुग की टीम और प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो तकरीबन 120 के करीब हमें यहाँ से नजर आ रहा है। एक अच्छी पार्टनरशिप अभी तक बिल्ड होती हुई हिनान मलिक और टीम के कैप्टन उमर आलम के दरमियान। उमर आलम 20 पे पहुंच चुके हैं 16 गेंदों से, जिसमें 2 बड़े छक्के लगाए हैं अभी तक उमर आलम ने। और हिनान मलिक भी दूसरे एंड पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 19 रन 15 गेंदों का उन्हें सामना किया है। इस ओवर की अगली गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुए, लेकिन पीछे खिलाड़ी क्या रोक पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, 1 रन मुकम्मल किया। हालांकि दूसरा लेना चाहते थे यहाँ से उमर आलम, लेकिन मना किया है हिनान मलिक ने और 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ 82 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और 5.4 ओवर की गेंदबाजी अभी भी आनी बाकी है। फुरकान भट्ट पहली मर्तबा गेंदबाजी करेंगे इस मुकाबले में और अभी तक केवल वो 2 गेंदें डाली है। अब तीसरी गेंद के साथ लंबे राउंड के साथ वो गेंदबाजी करेंगे 7 नंबर की जर्सी पहने हुए। हिनान मलिक के लिए गेंद को कट किया है, वहां पे फील्ड करने की कोशिश और गेंद को नहीं रोक पाए और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई है 4 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक हिनान मलिक की जानिब से और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और आहिस्ता आहिस्ता से इस रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है दोनों बल्लेबाज उमर आलम और हिनान मलिक की जोड़ी। और हिनान मलिक वो 23 पे पहुंच चुके हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन और जानते हैं यहाँ से टीम के कैप्टन उमर आलम, क्योंकि उनके लिए ये मुकाबला जीतना बेहद ज़रूरी है। और मौका है वैली वेरियर्स श्रीनगर के पास, जितना भी आपको टारगेट मिले उस टारगेट को 13 से 14 ओवर्स में मुकम्मल करना है, तो तब जाके वो अगले राउंड में जा सकती है। और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर नेट रन रेट की बात की जाए, उनकी नेट रन रेट जो है वो काफ़ी डाउन है, -5 उनकी नेट रन रेट है। और अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है तो टारगेट आपको जितना भी मिले उस टारगेट को अचीव करना है 13 to 14 ओवर्स। तो पिछला मुकाबला जो उन्हें जीता है, तो जिसके कारण जो उनकी, और इस बार खूबसूरती के साथ स्ट्रोक खेला है उमर आलम ने, छोटी गेंद पुल करने में कामयाब और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और इससे पहले जो मुकाबला यहाँ से वैली वेरियर्स श्रीनगर हाई मार्जिन के साथ वो मुकाबला जीती है, जिसके कारण वो उनकी जो नेट रन रेट -5 थी वो -2 पे आ गई है। और अब यहाँ पे मौका है
जो टारगेट आपको पहली पारी में यहाँ से मिले उस टारगेट को आपको अचीव करना है 13 से 14 ओवर्स में, तो तभी जाके यहाँ से वैली वॉरियर्स श्रीनगर की टीम अगले राउंड में जा सकती है। फिलहाल अगली गेंद के साथ इस ओवर की अंतिम गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बल्ला चलाया था ज़रूर लेकिन संपर्क नहीं हो पाया और इस तरह से ओवर मुकम्मल हो चुका है। स्कोर 91 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवर का। खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रेक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं और हाँ, यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेविंग्स के साथ। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रेक ऐप। तो अब जलील भट्ट 16वें ओवर के साथ अभी तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है जलील भट्ट ने, 10 रन खर्चे और कोई विकेट अभी तक हासिल नहीं किया जलील भट्ट ने। अब तीसरे ओवर के साथ वो पहली गेंद को खेला है, हालांकि रन लेना चाहते थे वहां से उमर आलम लेकिन मना किया है हिरान मलिक ने। स्कोर बदस्तूर 91 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और अभी काफी सारे विकेट्स आपके हाथ में, 6 विकेट अभी भी आपके हाथ में बचे और 5 ओवर का खेल आना बाकी है। 29 गेंदे और बाबा, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ से 130 140 लेके जाएगी रियल सुल्तान समरबुग की टीम? हालांकि दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, हिनान मलिक की तो बात ही अलग है और उसके साथ साथ उमर आलम ने भी आज अपना जलवा दिखाया है, 2 बड़े छक्के लगाए हैं और पूरी तरह से साथ निभा रहे हैं आज हिनान मलिक का। तो मेरे ख्याल से इस टारगेट को काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, तकरीबन 130 के करीब मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। I won't be happy at all, if they do not cross 140, to be frank and sure. Because if you look at Hinan Malik and Umar Alam, they both have been scoring runs. They are on 25 each, facing the same number of balls. And today, it has been Umar Alam just promoting himself up the order, and he loses his goal. He lost the grip of the handle as well. Just quite lucky for the man, falling short of that long on fielder. We have seen this man hitting 2 glorious sixes. To me, I believe there is no better player in J&K cricket who is the best when it comes to use and go down the track. Such is the great tendency when it comes to Umar Alam. He is a special act when he goes down the track. Those 2 sixes he hit, they were glorious to watch out. Chalil bowling his 3rd, wicketless, picked up 3 in that first match of the day. Projected score is revealing 120. And I believe having 6 wickets in hand, plenty of balls left for you. Running hard, nice running between the wickets. That's superb. Valley Warriors, I was talking to Irfan in the middle phase of this very first innings. He did mention our plan is to try restrict them and close to 120, 130 and then get back to the chase. And it's a wide ball. And it has come to my ears, I'm not pretty sure of. And Valley Warriors, whatever the total, they have to go for chase. They need to chase it down under 14 overs. And they might go through. That's a really surprising thing because you never know what goes with the net run rate issue. A single to finish, 16 overs gone. They're going just fraction over 6. It's 98 for 4.
So back to Furkan, wrapped on the pad. And eventually now we could see the captain Syed Sagar goes back to the pace. Only 4 overs left, makes that 24 balls. And you go run a ball, you go just close to 121. That won't be good enough for Real Sultan to dip in. Because we recently see in the first innings how good were the chasing from the Valley Warriors Srinagar, especially Irfan and Sarsheel Abbas, the way they chipped in with those glorious half centuries. And Hinan gives an absolute heave and a lovely stop, saving 3 runs for his side. Slowly and steadily, 100 runs on the board, 22 balls. Is Umar Alam just going and hitting some big blows here. And from tomorrow onwards, we're having the next round stage games. Down the track, hits it on the full, in the gap, running. Irfan gives a stop, lovely control. Irfan alongside Sarsheel on that mid-wicket and long on region, they have been brilliant both. Javed Daryal and Mr. Shoaib on the screen. Another 2 officials into the rescue. The ground fielding has been something sublime. Not giving too many runs. Catching has been superb. And Syed Sagar, he's a happy man. And he has got all the reasons to be a happy captain. Again, down the track. Not having full control. All going in singles. And a 50 partnership between these two. 40 balls. And you could see the dugout of the Sultan Summerbugh. Last ball. Ismaili counting it big. And he goes again. Just not punts it right. I believe they should back V2. And a glorious running. Good running between the two. And they are running for everything coming their way. 17 goes. It's 105 for 4. And you could see Umar Alam just sitting and taking some time to... बनते रहेंगे. आपका पैसा कब बनेगा? जाने के लिए कांटेक्ट करें हाउस ऑफ वेल्थ को.
And is this the over he was looking to target? And I believe he has got the boundary. And the plans are quite visible. Jalil bowling is last. And Alam drives handsomely. Should be back for 2 more runs. Great running between the wickets. And we have TV umpire now as we go upstairs for that run-out decision. For 2 more runs. There, it looks close. There, it looks close. It looks close. It looks close, and it is close. He's out. He's run out, Hinan Malik. What a great throw from deep. And nice work by Jalil to dislodge the bails. And finally, that partnership has been broken in that fashion of run out. It's Hinan Malik who departs for 30 up 23. A good knock comes to an end. And Valley Warriors back in the game again. And the man of super over against the Hill View Rajouri. It's Vijan Panchal. What a performance in that match against the likes of Hill View Rajouri. And he was the man who hit a boundary. Then the super over was used. We go for the second super over. And he was the man who just alongside Real Sultan just dealt quite well. Basit Akbar having a nice throw from the deep and Jalil doing the tricks. Vijan Panchal. How many runs he tries and goes and piles up in the remaining 3 balls. I believe he will be giving a go from the ball one still. Sajid Dar is to come. He is another good slogger of the ball. And a slower ball. Not picking it pretty early. Committed for a shot. It's all experience that Jalil is using. No, leading edge. It's gone down to the third man. Oh, drops. Well, Vijan Panchal has been dropped. He wasn't convincing. It was a leading edge at Skyer, you could see. And eventually it was lucky for Vijan that he survives. Not a good position to come into. Jalil cannot believe it. He is wicketless. He could have got the first one. And he goes. Basit! Oh! Drops! What's going on with the fielders of Valley Warriors? It's 2 catches and 2 balls being put down. And this can come out quite expensive for you. Watch out. It was an easy catch by Basit Akbar. And eventually not the perfect balance to catch it. And Jalil, he can beat his head. What's going around? And eventually luck favors the brave. This is what Sultan Summerbugh are doing. So we're done with 18. And it's 1-1-3. Projected score reveal is 126. Think mobile. Think Solucity. Where the train finishes, and I was telling about the spectators enjoying, sitting relaxed, having a great eye in the game. And
And they know they are on the big screen. And the reason for having those smiles on all of the faces. Furkan, full toss, Alam goes. And what has actually come up with a big plan for Said Sagar is he got a plenty of bowling options. And he used all those quite perfectly. Just stopping the opposite side for those number of runs big on the board. And it's again that same type of a total that could be the chasing for Valley Warriors. But you never know. They can be the team number 3 getting into that next stage if they defeat Sultan Summerbugh in this match. Remind you, they got to chase this total in 14 overs. And they do that. There are maximum chances for Valley Warriors that they can thrash this team out of the tournament. So there will be calculations, there will be plans, there will be eyes on the run rate. But if Sultan Summerbugh wins, they will be through and Valley are out. Chip shot, might go, and it does go the distance. This is Vijan Panchal with a helicopter shot. Great eyes and wrist into the play. And it goes sailing all over the head of Irfan Mir for a huge 6. Watch out. This is typically a helicopter shot. On the roof. In the sun, not in the rain. Wrapped on the pan and up goes the finger. Done the next ball. Not the important what happened on the previous ball. But Furkan has been an absolute successful bowler now. A 6 on the previous ball and a wicket on the next ball. That's Valley Warriors for you. रन्स तो बनते रहेंगे, आपका पैसा कब बनेगा? जाने के लिए कांटेक्ट करें हाउस ऑफ वेल्थ को। ये टाइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैक्स होम सॉल्यूशन से खरीदा, घर चमक गया। मैक्स होम सॉल्यूशंस पर आओ, अपने घर को नए स्टाइल में सजाएं। Anyways, 2 balls to go of this over. New man, Sajid is a great slonger of the ball. He can hit mile. Where they finish. And misses. Keeps low. Not able to read it. That dot ball will mean a lot. Valley Warriors proving their exemplary signs. And I believe Said Sagar has proven himself that he is rated as one of the best players and a good captain. What a captaincy. What a skillful guy. Motivates the players all through. Keeps them pushing. Encourages and boosts them by talking too much. That's a sign of a great leader down the track. And he got to stop it long off. He goes, stops it. And there is 1-2-1. टिकट, अकोमोडेशन, सब कुछ आसान और आरामदायक। इस बार अपना सफर अल सफीर के साथ तय कीजिए। बुक नाउ, जन्नत के सफर का वक्त आ गया है। अल सफीर टूर्स एंड ट्रैवल्स, खिदमत में हमेशा। What an absolute performance we have seen from Valley Warriors.
And from nowhere, I would say that they're about to make an absolute miracle. It can be something surprising for the teams of Pool B. Valley Warriors are making a statement. Where they finish, Sajid on the ball. 6 balls to go. Alam on the non-striker, 39 of 30. Smashes it. There is a fielder at the mid-wicket. Is giving a chase. Should be back for 2 more. And they are through. Very good running between the wickets. And in the first match, Valley Warriors were chasing 123. It is 123 in the next match, so means still 5 balls. It can be more than that. But I believe they are having those plans. They're trying to seal the deal in just a matter of 13 or 14 overs, and they are getting through. And bowled him. What a great ball. Absolutely a slower ball. Good with the variations and paying the price. Syed Sagar doing an absolute Syed things. He is a man who is known for sledging, but today we haven't seen just a fraction of that. He has been bowling brilliantly. Just watch out. Oh, what a great off-cutter. It was more of an off-spin. And Sajid was having no clues whatsoever. Knocked over beautifully. That was an absolute beauty from Syed Sagar. And you could see he is a delighted man. And Amir Sofi goes in. 4 balls to go. Can't understand why he was sent a bit late. And he has the plan to try and just get as many as he can. Down the track, first ball. It's long gone, and he catches it. Sagar is 2 in 2 now. He's on a hat trick. Soapy goes. And Umar Alam on the other side, you could see he's having disappointment on his face. Nothing going right. It's just like a pack of cards being scattered. Sultan Summerbugh came up with a different combination and with some absolute performers in the side. But no one has been dominant. It has been only captain and alongside Hinan Malik. Rest, it has been totally failure. They have collapsed a big way. They're choking. It's Yasjeet. Hat-trick ball. Clips could be. Just no shot off that mid-wicket. And Umar Alam will not be happy for the second run. He loves to go for these remaining balls. Yasjeet. Two balls to go. Olam on strike. As he's dispatching it out of the Luktipora. He just goes with that normal stride. Down to the mid-wicket again, only for a single. What a great over from Syed Sagar. One ball to go. 1 to 5 for 8. Almost the same what happened with this first game. Valley Warriors will be absolutely blessed with the team's performance. And this man holds the real appreciation. Captain Syed Sagar. Last ball, smashes it through. There is a fielder in the deep. Should they come back for 2? I believe they will, but chance of run out. Oh no, misses. And they are through for the 2 more runs. Good running between the wicket. They finish at 127. It's 128 going to be the target to be chased down.
There were wickets in hand, but Sultans could not do that absolute damage what they would have loved to go in this game. So this is an opportunity for Valley Warriors to dominate, get this total done in 14 overs. Maybe there is something surprising in that net run rate and they may get through. So what goes next? We will be back with the chase. Till then, it's Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
बॉल घूमता भी है, खुला हुआ है सारा इधर से
And bowled him. The very next ball. This is Yashjit Paryu. He is stealing single-handedly. Okay. What a start to Sultan Summerbugh. Both the half-centurions of the first match. And they come out to be both with the zeros. Knots, ducks for them. It's a strange experience for Valley Warriors. They send down both those half-centurions to try and seal the deal. But Yashjit is totally making it absolutely different and opposite of what happened in the first match. It's a wow bowling from Yashjit. And a smile is all over on the faces of Sultan Summerbugh. No there on the top. Nothing going great. And now to Basit is Darin Akbar, Basit Darin, Basit Akbar. And what a stage they are in. It's troubling situation. It's 1 for 2. And Summerbugh on the top. And on the back foot he has to go. Just pushes it straight to the cover. First over gone. Chasing 1-8. Valley Warriors. They are 1 for 2. तबीयत खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है डोंट वरी एट ऑल क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रेक एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं और हाँ यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं वो भी सेविंग्स के साथ तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रेक ऐप ये टाइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं मैक्स होम सोल्यूशन से खरीदा घर चमक गया मैक्स होम सोल्यूशंस पर आओ अपने घर को नए स्टाइल में सजाएं And a big stage in the game. Omar Alam starting with a spinner and a pacer. And just defending 128, having 2 wickets in the first over. This is something serious for Valley Warriors Srinagar. Oh, wrapped on the bat. Could be, and is! Oh, it's a disaster for the side of Valley Warriors. Basit Akbar also goes. He was just taking a stride down the track. He was aiming to go over mid-wicket. And he was just trapped in front of the stumps. And umpire Zubair took his time and raised his finger up. Valley Warriors sinking. It's 1 for 3. Oh, that was hit on his back leg. And you could see the Omar Alam in the slips. He looked the most happiest man. Sultan Summerbugh. They are a tough team in this pool now. And all of a sudden, those hopes have started to shatter. Irfan Lara goes, Sarsheel goes, Basit Akbar goes. And now comes to the middle, Jamil Nazir. Another right-hander. So out here, the situation that looks totally in control. And Valley Warriors would have given themselves a bit of imagination that we can deal it just quite easily in the 14 overs to get through the next stage. So overall, we can say it's just like a knockout or a do-or-die fire stage for them. And having such a disastrous start in the just over number 2, wherein both the bowlers have shared wickets completely.
That's a tough call now, but you never know in the shorter format. One good partnership and things can change quickly. And I could see in that first match, the supporters of Team House of Wealth, they were so closely attached to the game. They were in person out here in huge numbers, watching the game. Wanted the results in favor of Valley Warriors. And same happened. Because that led the team of Team House of Wealth getting into the next stage, wherein they can bring some different changes and faces in the lineup. And you know now it's really just like a stage for them, for you win and you go to that bigger stages of this tournament. So ultimately, now we could say and we could believe that the best teams of this tournament have gone to the next stage. Chip shot. He was aiming to go straight over the covers. Not able to hit it, but just happened to play it just to the left of the Yasjit, who was standing at mid-on, and the ball races away for 4 runs. First boundary finishes at the last ball of the 2. It's 7 for 3. And back to Yasjit now. It looks like he is a professional archer, I would say. And he just sets that line, actually, that right hand that allows him to have that accuracy into the best. Oh, could be another one. It's gone. It's again Yasjit. So you could see he's having the celebrations all over. He's a tough bowler to face. And I believe every batter from Valley Warriors would not love to face him. Such is the real revolution he's bringing in the game. Basit Dar goes. Both Basit is back to the pavilion. And are we going to break that record of the lowest total? It was 27 by Kotwa Warriors. And we are on the brink of that lowest total being broken. Valley Warriors 7 for 4. 3 wickets to this man Yasjit. And Sajidar has won. It's just like backup cards is being scattered. And the courtesy, it's the man on your screen. Yasjit doing it at his own. New man in, Mudassir Abbas. Oh, into the surprising moment, straight away. Double minds. He's a tough customer to face. So now situation definitely looks a bit tougher for the side. Said Sagar, I could see, padded up completely. The captain. They need a partnership. And I was talking to Tajammul Baba during the breaks. He did mention that we are good at the scope because we have got some wonderful spinners, especially Yasjit at the top.
He will for sure pick up around 3 wickets, and he has. He's still into his second. And he has conceded just a single so far. What a bowling carnage. Normally we go for the batting carnage, but it's out here completely opposite of the same. It's a bowling carnage. And with the top orders, the centurions, the half centurions of the first game, without opening their accounts in the second game. And watchful, defensive. Straight to Mohsin Ramzan in the short covers, not for the runs this time. So now there will be preparations. There will be homeworks. There will be plans. How to deal these very, very genuine spinners for every side. Oh, goodness me. He has swept the bails off. Are we going upstairs? Are we going upstairs? But I guess umpire Zubair looked not interested and he shook his head and said not out. Another great over comes to an end. Rather, we have third umpire into the play. Now we have it was a brilliant take. And quickly he just dislodged the bails. Still. The decision, it's pending. Third umpire is having a close eye. Taking a lot of time. So they're checking. And the question is, when the bails were off, was his right boot landed or not? It's really a tough decision for Javed Daryal to make. And it's not out. I believe that toe of that shoe was just grounded. Back to Sarsheel again. And the run rate has gone over 7. That's where it will really come up with the double pressure. Believe it, it's 7 for 4. Just one boundary has come so far. Rest it has been dominance from the bowlers. Oh, keeping low. Unplayable on that moment again. And recently, just try and have a look on the performance of this the Real Sultan Summerbugh team. Royal Premier League Pulwama. They were the finalists. They came up as the second best team, runners up. They were beaten at the hands of the same team they are playing against at the moment. That's Warriors Srinagar. There were some different faces like Shabir Lefty, Manzoor Pandav in the lineup, Adil Zahoor. Adil Zahoor had a hat-trick. But the Real Sultans, I believe, have taken some good lessons from that loss in the finals. Just making some bold decisions, playing some brave cricket. And you could see how easily they are defending this low total of 128.
could be tight. Oh, when it needed, it was Boymir who missed out on that throw. It could have been serious results for Jamil and Mudassir Abbas rather. Leading edge, but it's the gaps. Over Vinjan Panchal. That will go for sure on the face. And over the line it goes and goes for 4 runs. That's a much needed boundary. But they need plenty just like this. Soft hands into the play. Need to grow this partnership. A single to finish. 4 overs gone, chasing 1 to 8. Valley Warriors Srinagar, they're 14 for 4. Back to Yazjeet again. Not carrying through. Over Alam, he was hit on his right hand. You could see he's going through severe pain. And you look at the bowling spell of Yazjeet. He has bowled 2.1 overs. He's conceded just a single run. Picked up 3 wickets. This is something absolutely brilliant. He is a naturally gifted bowler. He's bestowed with something special when it comes to his skills of the bowler. Power play on, still an over to go after this gets done. So Umar Alam just using these 2 options quite brilliantly. And Jamil and Mudassir Abbas taking their time, even though Jamil has gone for 10 of 11, almost a run and ball. But a long way to go. And they are quite cautious and careful. But I believe in just getting these number of runs quite quickly, knowing that into 14 overs we got to do and deal this. That's where they are lacking, and they are just having those big sufferings. Suffering huge and massive. And again, just letting the ball come close, pushing. Watch out, 5 dot balls. Can be another maiden over from Yazjeet. And he has turned this game at his own. Oh, gone! This is a special bowler. Ho, special results. Well, the way he was holding his ball, that was totally going to turn away from the right-hander. This is something you got to try and look into this man. As a batter, you got to read him. And it takes me back to those tips
when Sachin Tendulkar would share those experiences with Virendra Sehwag. And they were talking about great Muthaiya Muralidharan of Sri Lanka. And this is totally coming serious, tough uphill task for the batters of J&K against this man Yazjeet. Picking up 4. It's a wicket maiden. Great catch by Umar Alam in the slips. And it is half the team back to the pavilion with not too many on the board. तबीयत खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रेक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर Watch out, this beautiful ball. Just hitting that shade of a glove. And Yazjeet knows it. Celebrated genius. A master of those balls when it comes to deceive the batter. And one master goes off. Another master comes in. It's Vision Panchal now. Another left armer. It's a big move by Umar Alam. Knows that it's right-handers. So better to go with these. Almost. One more. Almost. It's 14 for 5. Remind you, 27 is the lowest total. That was Kotwa Warriors against the Sultan Warriors bottom 11. Nadeem Dar had 6 wickets and Azim Rathar had 4. And again. He says where is coming and where is it going. This is absolutely hard to read the bowler. And Mudassir Abbas has no clue. No clue. Clueless. Finally got some bat. Said Sagar, the new man, the captain of Valley Warriors. Remind you, he is not that technically very sound. And is the captain of the side. Maybe he gives himself a bit of charge. Comes down the track. Tries to minimize that lot of turn. Oh, almost carried. Almost carried on the bounce. It's a serious stage for Valley Warriors Srinagar. Not a big total they are chasing, but it is coming bigger for them now. And actually, it's something where Sultan Summerbugh are very tough team because likes of Yazjeet and Vision Panchal in the lineup. So goes with Amir Sofi as well. Leaning forward on that. Straight defensive, back along, not for runs, 2 from the over. Power play done, just 1 extra. It's 16 for 5. लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। ये टाइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैक्स होम सॉल्यूशन से खरीदा, घर चमक गया। मैक्स होम सॉल्यूशंस पर आओ, अपने घर को नए स्टाइल में सजाएं। मैक्स होम सॉल्यूशंस पर आओ, निटको टाइल्स लगवाओ, घर को स्टाइलिश बनाओ। Another left armer. It's young boy, young gun, under 19, I guess he is Huzaf Lefty. And Sultan Summerbugh known for giving that support to the young talent. That emerging talent, just giving them the platform, especially the big stage. And getting them ready for those big level of cricket. So Huzam Lefty going against the captain.
And gone! First ball! What a start for this young Huzap lefty. Captain goes. It was Said Sagar wanted to go for a hue. And a thick outside edge. Straight to Umar Alam, who is having a good time in the slips. Second catch for the man. Believe it. It's 16 for 6 now. And who would have thought this chase of small total would just be in this dramatic fashion? Jalil Butt. It's a real test of his skills against the left arm spin. And it's Yazjeet who has to be given that credit for just having that door open of that wickets column. 16 for 6, on the verge of creating a history again. And the question is Umar Alam just using his options quite brilliantly now? 27 all out, Kotwa Warriors, the lowest total. 16 for 6, Valley Warriors Srinagar. Can they? No, low bounce on that. Finally, Jalil just plays it. Caught his bat down at the stipulated time. Down to that mid-wicket for a single opens his account. But the Abbas has been there for 10 balls, just scoring 2 runs only. It has been that brilliant captaincy as well now, adding one more slips in the place. Was there an edge? I believe the reaction of Umar Alam tells the same. There was something. And it's not an easy take because the ball was surely keeping down. Could have been serious. It's a white ball. Yeah, through for one more means there will be 2 runs. Umpire Arif alongside Zubair. Zubair is at the scaling. There have been 4 umpires in this tournament. Zubair, Arif, Shoaib and Javed the Real. There's also the chief mentor. Oh no! Just could have been another fish. It could have been Jalil Butt. Huzab, what have you done, young boy? Well, it was coming at him quite unexpectedly. And Jalil, look at his eyes. He knew it was going down. Another great over comes to an end. 7 gone, 3 from it. It's 19 for 6. अल सफ़ीर टूर एंड ट्रेवल्स, जो आपकी मुक़द्दस ख्वाहिश को हकीकत में बदलता है, आपके नेक सफ़र में पल पल का साथी। हम फराहम करते हैं हज और उम्रा के मुकम्मल पैकेजेस, आरामदेह रिहाइश, पुरसकून और महफूज सफ़र, कदम ब कदम रहनुमाई। आपका सफ़र हरमैन हमारा एजाज़। आज ही रब्ता कीजिए अल सफ़ीर टूर एंड ट्रेवल्स, गांजीवारा, अनंतनाग। Yashid bowling his last. Oh no, no.
Rather, it's Vision Panchal. Correction with the name. And Mudassir Abbas is having no idea. Look at that. It's unplayable stuff. Just like they're just toying. That could be the another one. Just falling away from Huzaf lefty. And Mudassir was just beaten on the trot. He believed that the best way is to go down the wicket, take a charge. And it's called just attacking your emotions, rather. Not being able to read those balls. And having those three left-arm spinners on the trot. So it means 12 overs. Surjit 4 minutes 16. Ahmed Sofi 4 minutes 20. So Moralo, I believe, says not to bother. That's bowling. And I believe no need to bring, you know, Ahmed Sofi, the way these three. Here's Jeet, Huzaf, Vision. And Vision is bowling with a vision totally. None for 3 off his 1.4. And Jalil, he takes the wrong route. He connects well. And he goes for a big heave. And he goes over long on and he goes for the 6. For 6 of the chase. And now that lowest total. I believe that's about to be broken. And it's going to be happen. Not out here. That was 27. It's 26 for 6. So just 1 run. Oh! Ultimately, once again, Jalil is quite lucky that the ball not carried through. तबीयत खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रेक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं और हाँ, यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेविंग्स के साथ। तो अभी डाउनलोड करें टेली। Zaf, pretty young at his age, has played a lot of number of matches, 64 of them. It's totally just getting out of the control of Valley Warriors Srinagar with that number of runs they need, still 102 more. And that lowest total rather. That's being passed. .28. Oh, quicker ball. What a ball that was. Finally got his bat down at the last moment. I believe Umar Alam might go to Ahmed Sofi after this over gets to done. And Valley Warriors are fighting it completely, just like a challenge at their hands. Not being able to accept the challenge quite easily. Just going over 3 runs and the required rate. That's around 8+. Big cap on the onside, inside the circle, all 3 men on the end of the boundary. Oh, wrapped but missing down the leg. Half-hearted appeal. And to be frank and sure, there's no doubt about that Umar Alam, a very special fielder in the slips. Safest of all, I would say. Has got 2 brilliant catches, has been a brilliant fielder in that region as well. So another single at the last ball. 9 overs gone. Still. Think mobile. Think Solucity. विकेट्स गिरते रहेंगे, लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ।
रन्स तो बनते रहेंगे, आपका पैसा कब बनेगा? जाने के लिए कांटेक्ट करें हाउस ऑफ वेल्थ को। No, Amir Sofi yet. It's Vision Panchal. Caught an opportunity of having a wicket, but both times the catches didn't carry. Not easy. Not easy for Jalil. Not easy for Jalil. Be careful. It's Vision Panchal. It's never going to be easy to hit him. He's going to be a strong man. Going to be a brave man. It's totally out of the mind at this moment, I could see. Jalil is finding nothing easy. Just walks it on the onside. Maybe after this over gets done, we have a strategic timeout. And now there looks no intent at all. Two slips in place by Umar Alam, giving an aggression in the field. And Vision Panchal enjoys his bowling, even though wicketless, but not many runs has been considered, rather considered on his bowling. So it's totally just going out of the mind and out of the reach. Now there are coming 2-3 runs every over, but that's not good enough for Valley Warriors. They need to think out of the box, a bit creative, and just create some magic with the bat. These two will have to really, but they are missing out completely after the 10 overs. Are we going for a strategic timeout? I guess no. रन्स तो बनते रहेंगे, आपका पैसा कब बनेगा? जाने के लिए कांटेक्ट करें हाउस ऑफ वेल्थ को। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा? ये आपको हाउस ऑफ वेल्थ बताएगा। Gone. He is gone. Jalil is gone. The ball capped low. He was having no idea. It's Huzaf who just strikes again. Second wicket to the man. Number 7 goes. And the big man departs, scoring 9 of 14. Watch out. Beautiful stumping. Down the wicket he goes. And it turned just sharply. And Sajjad Sultan is looking into the eyes of Jalil. Come on, man. You got to go behind. You got to go back. Just look at that. That was something brilliant. And down the leg. And umpire calls it as a wide ball. Furkan Butt now walks to the centre. It has been absolutely tough chase. Even though not too many on the board to be chased down around 28, 128. It's totally the left arm bowlers dominant. Stretch forward, backward, but he was way off.
And this young man is bowling brilliant, impressive. Control, accuracy, mixes, variations, toss up, straightener. And no idea for this new man, Furqan. So here I am just about to say that these big players have really got exposed to the lap-stump spin, especially the batters from Valley Warriors against the likes of Yazjeet, Huzef, Vision Panchal. They have not been able to read them. Easy. Oh, that was a catch. That was Samesh. Oh, bowled him! Just behind his legs. Mudassir Abbas. He was spending a lot of balls, a lot of time out there. 7 of 19. And it did go for an innovation. A bit of a scoop and a bit of an absolute pedal sweep on that. Misses out. And he goes, just scoring 7 of 19. There you see. Not a great execution. It's number 8 that goes down. Just 2 wickets away. And sealing the deal in a big fashion. And it's Naveed Kado, the man of the match in the first match. 4 wickets, brilliantly bowled in the second match. Got 2 wickets around. And he bowls right and he bats left. And smile is on the face of Sajal Sultan behind the stumps. They know they are absolutely on the top of the game. Can't lose from here. The required run rate has gone over 10. It's a big task at the hands of these players. With top order already gone back to the pavilion. It's Kadu and Furqan. Is Huzef just joining a 5-wicket haul. He has got 1.1 overs left. He has got 3 wickets, 3 for 9. Brilliant spell. And just plays it, leaning forward, defensive straight to that Vision Panchal inside the covers. So wicket in it, 11 overs gone. It's 35 for 8. Think mobile. Think Solucity. Captain brings Yazjeet back. 4 wickets for just 1 run. This is something extraordinary and unique. A magical performer. And who does magic with the ball. That's Yazjeet for you. 3 overs, 1 run, 4 wickets. Oh, you need a man of this caliber in your side always. What a performer. Captain believes that he is surely going to wrap the innings up in this over. Bowling is last. Look at that. 2 maiden overs, 18 dots, just 1 run. Dugout of Valley Warriors Srinagar completely quiet in silence, stunned. Naveed Kadu on the other side is a left-hander, but he bowls right. Has been something where we are able to say that the batters of Valley Warriors, they have been absolutely helpless, playless, clueless, speechless and shotless before this Yazjeet, Vision and Huzef lefty. And he does. Oh, wicket number 5. It's a 5-wicket haul and he knows that he has done the job. Brilliant performance. That's why captain brought him. And it was a plan to try and bring him and seal the deal. He has got 3 balls left and he has got just 1 wicket. Is he going to match that performance with Nadeem Daru? Got 6 wickets and Yazjeet is just 1 wicket away.
Final batter, Rahil Leggy. Is he going to read him up? And I believe not. Yes, Jeet. 5 for 1. Normally you don't see these bowling figures. But when you are watching in House of Wealth Champions, look at that grip. Look at that grip closely. That right hand where he just produces that accuracy. That's something sensational to watch out. And I must be telling you, any youngster who's watching this, Jasjeet, well, he can surely help yourself to turn out to be a big spinner of the ball. Down to the right of Ahmed Sofi. 1 ball to go. And believe it, believe it, believe it. It's 5 wickets. It's just 1 run. It's 1 ball to go. A 4-over spell. That's Jasjeet for you. And just look at that again. That's tremendous to watch out. Brilliant. And finally, Rahil Leggy plays it. And Mohsin Ramzan does a bit of football. A brilliant spell. And he picks up a 5-wicket haul. He's surely going to be a strong contender for the man of the match. 1 wicket away. Is it Hoseb Lepti, who has also 3 wickets? But I guess it's Umar Alam now. And who gets to ball, and he will be bowling slow. That's for sure. And he says, let me give myself a bit of bowling practice. 35 for 9. Chasing 128. And you can see the real impressions from the likes of Sultan Summerbugh. With Cardo. Expression is on his face. Well, he is speechless. It's a fake smile, I would say. Temporary, short-lived. And he knows that it's totally the scene where we could do nothing at all now. It's gone out of the limits. And it's just some balls he plays and enjoys some batting practice. And with this, Valley Warriors goes out of the tournament. And Sultan Summerbugh goes to the next round. Hill View Rajouri and House of Wealth team. And from this pool, Valley Warriors and Valley Fresh Cold Chain, they're out of the tournament. And might go all the way. But who's have left? With Cardo not ready to throw and run. He wanted to have some balls. It does feel quite okay against Umar Alam. Not a big turner of the ball. Rahil Leggy smiles on both sides. He's a leg spinner. Is he coming down the track? Oh, almost hits the leg umpire. And that's gone down to the fence and goes in a hurry for 4. It's Zubair, the umpire. He was hit almost. Luckily, he just bent himself. And the ball races away for 4. Watch out. And there it was. And I believe Umar Alam, after this over gets done, either he brings Vision or he brings Hoseb Lefty. They both have got, I believe, 1 over each. And he's a lucky man. And not going through to Ahmed Sofi. It's just like... It's what we call you are just going for a fun. And Ahmed Sofi, oh, drops. Umar Alam is completely pissed off the man. Well, so does Hinan Malik. He beats the ground. What have you done, Ahmed Sofi? It was coming simple and straight at you. There you go. Oh, it's gone down. Angry face, angry man Umar Alam.
And there you go. This is where you gotta be so great always at ये work. टाइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैक्स होम सोल्यूशन से खरीदा, घर चमक गया। मैक्स होम सॉल्यूशंस पर आओ, अपने घर को नए स्टाइल में सजाएं। And down the leg. It's been called as a wide. One more extra to the total. And score goes to 42. Again, not being able to read that young Yan. 3 for 10, bowling his last 4 balls to go. And still that catch put down by Amir Sofi in that last over by Umar Alam. Not reading it again. Talking about the number of runs chasing. It's only that wicket last, 42 for 9. What a brilliant spell. Brilliant performance from Sultan Summerbugh. Yazjeet 5 wicket haul. Hoseb 3 wickets. Sajad 1. Sajid another 1. And smile is on the faces telling you the whole story. And going through straight to the long off and goes for a single. Just not carrying through. मैक्स होम सॉल्यूशंस पर आओ, निटको टाइल्स लगवाओ, घर को स्टाइलिश बनाओ। And now, as this match is about to finish, we go to the next round. The qualifier is about to be happened between Sultan Warriors Baramulla and Hill View Rajouri. And the two teams, each from both poles, they will go in that cross section. So means we are left with only 6 matches of this tournament. Hill View Rajouri with 3 wins. Summerbugh with 3 wins. Their run rate is just a bit down. And has it carried all the way? Has it? Yes, it has. Oh, it was going over the commentator's head. Rather over the box. With his right leg, he did it. And there he goes, smashes it. And it went like a flying bird who was long gone for a biggie. And he goes another. He goes this time. Over wide is long gone. It's 2 in a 2. And you are allowing Roy Leggy to do the damage. He can hurt you. And time to bring Vision Panchal after this gets done.
And has he? No. I believe there was something. He was doing some football. He was doing some dance. He was trying to keep the ball away from hitting the stumps. A dot to finish. 15 overs gone. And it's just a very, very difficult deal. There you go. That's what I was ये predicting. टाइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैक्स होम सोल्यूशन से खरीदा, घर चमक गया। मैक्स होम सोल्यूशंस पर आओ, अपने घर को नए स्टाइल में सजाएं। Vijan. Can he go and finish with a vision? Leading just again. Not carrying through. Couple of times we see the ball looping and leaning. And not carrying straight to Vijan Panchal. And just around 6 inches away from this tall guy. And he shows with all his smiles on his face. Down the track, this is up in the air, crosses down, 1, 2, 3, and it goes over the fence and goes for 4 runs. All of a sudden, this last pair out there taking too much of time. They were around 9 down in just 11, 12 overs, but these two have just added some runs, played some overs as well. This time, is it going to be caught? Again, will fall in no man's land. It's not working now with the side of overthrows. Rai Leggy is not impressed. Rather not interested to try and run through for another single. He wants to have some time with the bat. Is he finishing this game on this last ball of the 16th Vision? Last ball of his spell as well. It is a wide ball. Extra to the total. Last wicket fell when the score was around 40. And it's going down to the deep 5 leg. And in doing so, the running hasn't been so impressive. Oh, misses the target. Could have been run out. And when it needs to matter, they are missing it. It's 30. So change in bowling. Ahmed Sofi gets into ball and bowls him up, cleans him up. So the bowling change does the trick. He was leaning forward to go for defense, but misses the line and it does the trick. The upstump has gone for a walk. Real Sultan Summerbugh winning by 61 runs. It's a big margin. So they go to the next round. Valley Warriors out of the tournament. So does Valley Fresh Cold Chain Storage Shopian. So the 3 teams making it to the next round from this pool. It's Hill View Rajouri, it's Sultan Summerbugh,
And it will be Team House of Wealth. And from the Pool A, it's Sultan Warriors Baramulla. It's Sky Stars Badgam and it's JK11 Shopian. And the top two teams from Pool A, it is Sultan Warriors Baramulla. And from Pool B, it will be Hill View Rajouri. So they will be going for a qualifier. The date of these two teams to go for a clash is about to be fixed on around 2nd of October. Maybe there might have some changes, but you will get that exact update on JK Sports HB. But the news here, and it's absolutely Sultan Summerbugh going with all their smiling faces. The final is expected to be around on the 4th of October in the coming month, on the coming Saturday, if the weather conditions do permit us with ease. So the news from here, in the second match of the day, Sultan Summerbugh defeating Valley Warriors by 61 runs, and they go to the next round stage. Thank you very much for being with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
थोड़ा राइट, थोड़ा हम किस काम में लगे अब? अंपायरिंग फिनिश। गेम चेंजर एडवोकेट तौसीफ मंजूर and Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Post-match presentation ceremony of the match number 20 of House of Wealth Champions League Luktipoora Edition 1 Season 2025. Well, it was a match, a must-win game for both sides. It could have definitely taken them to the next round stage of this league. And Valley Warriors started the day with a victory. It was definitely some simple total for them to just get back in the chase in the second game of the day. But when it is the Real Sultan Summerbugh, things are never going to be easy. What a great victory. Finally, it came to the side of the Real Sultan Summerbugh, and they won, defending just 128 by a margin of 61 runs. So, congratulations and a big hands to the Real Sultan Summerbugh. With this victory, they have gone to the next round stage of this league as well. So we start this felicitation ceremony. Not too many awards to be presented. We have got two rather. First we go with Game Changer Award. And to present this Game Changer Award, may I request it to come on the stage, Mr. Rosa, please. He will be presenting Game Changer Award. And this Game Changer Award goes to the Paji, the ex-Raji cricketer, the captain of the Real Sultans, Mr. Umar Alam. Big hands for Mr. Umar Alam. Absolutely, the captain's knock came at a stage when his team was struggling and batted brilliantly for his porties. Wonderful performance, and congratulations, Umar, for your wonderful performance and going to the next stage. Thank you very much. And moving on, we go for a special award. This is Man of the Match. And to present this award, may I call upon the stage Advocate Mr. Tawsif Manzoor Sahab, please. He will be presenting the Man of the Match award, even though great performances, but the man who has become a mystery and something that is absolutely so far not revealed. He is absolutely a mystery to pick up by the batters of J&K. He is the man who bowled brilliantly, 5-wicket haul, just conceding 1 run only. He is Mr. Yazjit. Big hands for Mr. Yazjit, please. What a performer. 5-wicket haul, just conceding 1 run in a spell of 4 overs. He's being presented the Man of the Match award by Advocate Mr. Tawsif Manzoor Sahab. कुछ अल्फाज जरूर शेयर करना चाहेंगे यज़ीद से. यज़ीद, पहले तो मेरे ख्याल से 1000 का जो खर्चा है वो जेब में जाए, उसके बाद आपकी बॉलिंग और मेरे ख्याल से मिस्ट्री बनती जा रही है जितना आप ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हो कश्मीर में, और इट्स रियली बिकमिंग चैलेंजिंग फॉर द बैटर्स. हाँ जी सर, बस मैं तो अपना काम कर रहा हूँ जो बचपन से करता आ रहा हूँ जब से मैंने खेलना स्टार्ट करा है, और मिस्ट्री का तो पता नहीं, बस नॉर्मल बॉलिंग कर रहा हूँ मैं. तो जिस तरीके से वो आप राइट हैंड यहाँ पे यूज करते हैं, यू बिलीव इट्स ब्रिंगिंग रियली अ ग्रेट सपोर्ट एंड हेल्प फॉर यू इन ब्रिंगिंग दैट एक्यूरेसी इन द लाइन. हाँ जी, ये मेरा बचपन से ही ऐसा ही एक्शन है, तो ये मुझे हेल्प करता है बॉलिंग अच्छी करने के लिए. तो मैंने तो प्लेइंग विद उमर आलम एंड रियल सुल्तान समरबुग, कैसे इस एक्सपीरियंस को आप शेयर करना चाहोगे? मैं इस टीम में उमर भाई के साथ लास्ट ईयर भी खेला था, और इस टीम के साथ मैं पहले साल जुड़ा हूँ, और बहुत अच्छी टीम है हमारी, बहुत अच्छा बैच है, और उम्मीद करते हैं हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे. तो आप नेक्स्ट राउंड में भी आ गए हैं, तो यहाँ से चैलेंज आप टफ और टफर होता जा रहा है, तो यू बिलीव यू गोना कम अप विद लॉट ऑफ बिग प्रिपरेशंस. हाँ जी, हमारी टीम बहुत अच्छी है, और अगर हमने अच्छी क्रिकेट खेली तो हम ये टूर्नामेंट जीते भी. तो यू कम फ्रॉम आउट ऑफ J&K और यहाँ पे आके खेला हाउस ऑफ वेल्थ चैंपियंस लीग लक्टिपोरा में, क्योंकि अवार्ड्स पे अवार्ड्स लेना यहाँ पे इस विकेट में. आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट में जो आप एक्सपीरियंस और एटमॉस्फेयर शेयर करना चाहोगे उसके बारे में जरूर बताइए प्लीज. बहुत अच्छा टूर्नामेंट है सर, और बहुत अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की है. मैं 2-3 टूर्नामेंट और खेला हूँ J&K में,
लेकिन मुझे यहाँ उन टूर्नामेंट से ज़्यादा मज़ा यहाँ आ रहा है. चलिए, thank you very much for this valuable comment. So Yazjeet, man of the match of this match number 20 for his 5-wicket haul. That's all what we have for the post-match presentation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.